गणपति अप्पा मोरिया मोरिया। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज विरार टू चर्चगेट वाली ट्रेन में आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही ख़ास बात है। पब्लिक यहाँ से अपने ऑफिस अपनी ड्यूटी जाती है, बट जिस मनोरंजन वे में जाती है, जिस एंटरटेनमेंट वे में जाती है, अपना मूड इतना अच्छा करके जाती है। सो आज ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो मैं कुछ खास जनों से आपकी बात भी करा देता हूँ, जैसे कि ये अंकल जी। आपका नाम क्या है? रामविलास जी। आपका? मुकेश मेहता। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट पर्सन हैं जो आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको इसमें इतना मज़ा आने वाला है ना गाइस। सो राणा अंकल है, मंडल के सेवा सदस्य। अच्छा, वो ये मंडल के सेवा सदस्य हैं। उनका नाम राणा, पूरा नाम क्या है? प्रवीण भाई राणा नाम है उनका। सो गाइज, आप लोग को मैं ये एश्योरिटी जरूर देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इतना मजा आएगा, इतना एंटरटेनमेंट होगा ना। जस्ट वॉच इट आउट गाइज। जय शिरडी वाले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवदानी मात की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। उमा देवी मात की जय। माँ काली मात की जय। संत पुनीत जलाराम बाबा की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। दिन शासन देव की जय। हरिओम नमः पार्वती पते महादेव। एक बार प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय श्रुतियास्त्र विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सद्गुरु देव की
महादेव की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय। दूसरा भाई हमारे श्री साईं बाबा मंडल के प्रवीण भाई राणा, रोहित भाई। नमस्कार अंकल। प्रवीण भाई राणा जो रिटायर है लेकिन एक मंडल के सेवा के सत्कार्य के लिए यहाँ हमेशा रोज आते हैं। माता जी का तस्वीर लाना, प्रसाद लाना और एक सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं। रिटायर है, खाली भजन के लिए आते हैं और वापस चर्चगेट मुंबई सेंट्रल से रिटर्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई जो सत्कार्य किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हमारे प्रवीण भाई राणा 2 महीने पहले उनको अटैक आ गया था और पैरालाइज हो गया था, लेकिन 1 महीने में ही वो स्वस्थ हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि एक सेवा का, भगवान माता जी का सत्कार्य का उनके ऊपर हाथ रहा है और ये भक्ति का एक उम्दा एक उदाहरण है कि किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोलो श्री गणपति गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान। जल
न उतरे न प्रभु की आरती, अन्न भी न ठके नहीं प्राण। बोले माताजी होला जल जिलन को नारे नवले वे अरे अरे અગણાનો મેલ હટાવીને એના ઘડાવ્યા એના ગણેશ हे आ जाओ गजानंद आ जाओ मंडल में आ जाओ।
રે એ પ્રેમે પરોણા ઘેરે આવો બાપુ પરિવારા
प्रसाद है। गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रसाद भी बंटता है। प्रसाद में लंबा दाजो बाजो दाए बाए अगल में बगल में कोने में कोपरे में दबाए हुए सोए जागे कोई बाकी न रह भाई। आप खाओ एक दूसरे को खिलाओ आप लो एक दूसरे को दो नहीं आया है तो प्रेम से मांग के लो बिना शर्माए घर की बात है। प्रसाद में कोई बाकी नहीं रह भाई। प्रसाद लो भाई, मांग के लो वाले को आगे पीछे दे दो भाई। उधर देना उधर। हाँ भाई ये भाई प्रसाद ये। हाँ भाई रोहित मिश्रा रोहित मिश्रा ब्लॉग पे उनका ये चैनल है। और दूसरा साईं बाबा का एक और परिचय थोड़ा रह गया है वो बता दूं रोहित भाई आपको। हाँ। कि श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल आज से 20 साल पहले जो पिता की अपनी बेटी की शादी करने की जो क्षमता नहीं है ऐसी 5 बेटियों की श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल ने 7 बेटियों श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल ने अपने स्वयं मजबूते बल पर स्वयं पूरा खर्च उठा के वो 7 बेटियों की शादी करवा के श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल ने दिया है। और साथ में 1.25 तोला का मंगलसूत्र भी कन्यादान के रूप में दिया है। उसके अलावा आज से 10 साल पहले जो डायरा बोलते हैं जो भजन बोलते हैं डायरा उसमें लोक साहित्य होता है भजन होता है लोकगीत होता है। तो ऐसा डायरा का भी आयोजन किया था भंडारा का भी आयोजन किया था और उसमें 25 नव दंपतियों को बैठा के सत्यनारायण भगवान की 25 पूजा भी करवाई थी। तो ये भी श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल की ये बहुत बड़ी विशेष पहचान है। तो कहते हैं कि भाई जीवन में आए हैं तो कुछ सेवा का सत्कार्य करना ही चाहिए वही अपने साथ आने वाला है बाकी कुछ अपने साथ आने वाला नहीं है। ऐसे ही अपन को भगवान के धाम में जाना है तो जरूर कुछ अपने जीवन में सेवा के सत्कार्य करें। जब आयो तू इस जगत में जगह से तू रोई करनी ऐसी कर चलो तू चले जाओ ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे चाहे तेरा ओ कैलाश के निवासी मेरे भोले बाबा हम करते तुम्हें प्रणाम करते तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया आके अलख जगाया वेद कोई समझ न पाया यशोदा के घर आया
साल लेके जा रहा बोल कृष्ण कन्हैया की जय। बोल भाई दूसरा मंडल का जो स्थापना दिन है 1983 4/8/2019 श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल साल में जो अपना जो कार्यक्रम करता है उसमें जो एक विशेष है श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल का स्थापना दिन 4/8 और 4/8 आने वाले साल को श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल वार्षिक उत्सव का यहाँ पे आयोजन करता है। पूरा डिब्बे को सजाया जाता है और ये वार्षिक उत्सव का 4/8 को बहुत धामधूम से मनाया जाता है। उसके अलावा आसो सुद नवरात्रि जो 9 दिन का नवरात्रि माता जी का रहता है उसमें भी यहाँ पे पूरा डिब्बा को सजाया जाता है और माता जी का पूजा अर्चना और आरती भी यहाँ पे होता है। ये मंडल के दो विशेष कार्यक्रम है जो हर साल होते हैं। उसके अलावा की सेवा के सत्कार्य तो होते ही है। दूसरा सभी यात्री भाइयों और भक्तों को सूचित किया जाता है कि रोहित भाई मिश्रा अपने बीच में आए हैं और उनका यूट्यूब पे चैनल है रोहित मिश्रा व्लॉग, उस पे अपना कार्यक्रम दिखाया जाएगा तो सब लोग ये देख सकते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ यूट्यूब पे उनका चैनल है रोहित एम ब्लॉग। यूट्यूब पे उनका चैनल है उसका नाम है रोहित एम ब्लॉग। उसके जरिए आज का जो वीडियो शूटिंग है वो आप देख सकते हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे जीवालय खंड
साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल की ओर से मैं खजांची हूँ। और मैं वापिस एक बार साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल की ओर से और मैं मंडल का खजांची होने के बावजूद अपने मुकेश भाई जो उनकी वाणी और उनके बोल के ऊपर हमारा जो मंडल जो चल रहा है उनके बहुत योगदान है बड़ा। और आगे भजन के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और कुछ लेके आते हैं। उसके मंडल की ओर से मैं आभार मानता हूँ। रोहित भाई मिश्रा जी आज लोकल ट्रेन के बीच में हमारे बीच आए और हमारा मंडल का एक प्रशंसा आपने की है और प्रशंसा बढ़ाई है, एक मान बढ़ाया है। उसके लिए श्री साईं बाबा प्रवासी भजन मंडल की ओर से और सभी यात्री भाइयों को और दोस्तों की ओर से रोहित भाई मिश्रा आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आनंद की जय, आनंद कराने वालों की जय, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू सो मच अंकल। सो गाइस आप सभी देख सकते हो कि इतना अच्छा भजन, मतलब क्या बोल सकते हैं कि गायक, बड़े बड़े गायक को टक्कर देने वाले यहाँ पे हमारे पास एक एक से अंकल है जिनका नाम पहले तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुकेश अंकल, मुकेश भाई मेहता, मुकेश मेहता नाम है इनका। और काफ़ी कूल अंकल है, काफ़ी एनर्जेटिक अंकल है, मतलब पूरे गाड़ी को, पूरे डब्बे को हिला देते हैं अपने आवाज़ से, अपने भजन से, अपने वाणी से। इतना प्यारा उनका वाणी है। सो गाइस ये संस्था है, आप जान सकते हो, ये यहाँ से संस्था चालू है। ये डब्बे में गीत होती है और ये 37 साल की संस्था है। आप जान सकते हो NGO चल रहा है यहाँ से। सो और काफ़ी अच्छे मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे। हाय सभी लोग। सो गाइस आप देख सकते हो कि सब एनर्जेटिक लोग हैं। और वो अंकल, वो ये संस्था के खजिनदार, ये संस्था के खजिनदार है, उमेश भाई नाम है उनका। और बाकी सभी बहुत अच्छे लोग हैं। आप प्लीज़ गाइस ये वीडियो ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।